Okay, so today we are gonna see about classification and prediction. It's an important concept in data mining. Okay, so prediction is about predicting a missing or unknown element, and classification is about determining the class for a given element. Okay? Prediction is predicting the unknown, missing or unknown element, and determining a class for an element in a data set. Okay? Classification is about determining the class for an unknown element in a data set. That's about it. We think of prediction as predicting the future correct treatment for particular disease for an individual person. Example where we are grouping a patient based on their medical record can be considered classification. Okay? A model is used to predict the unknown value, that is called predictor. The model that is used to classify the unknown value is called classifier. A predictor is constructed from a training set to its accuracy refers how well it can estimate the new value. Okay? And its accuracy refers to how well it can estimate a value. Classifier is also constructed from a training set composed of the records of the table their corresponding class names. ठीक है? Constructed from a training set composed of the records of the database and their corresponding class names. ठीक है? और फिर इसका डिफरेंस पूछे तो तुम बोल दो कि classification is assigning class to the data elements. ठीक है? Is about determining it's about determining class या फिर label for a element in data set. It's about predicting missing या फिर unknown value. ठीक है? It's about missing or unknown element or value या फिर element. ठीक है? So there is a classification and prediction. Classification, it's about determining the label class or label for element in a data set, and classification, yeah, and prediction is obviously predicting the missing or unknown element from of a data set. What's the difference for that? It's about determining the class or for an element in data. It's about predicting the missing or unknown value. ठीक है? और एग्जांपल देना है इसका एक पेशेंट वाला कि भाई पेशेंट का रिकॉर्ड पड़ेगा. ओके? और मॉडल इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट वैल्यू. द मॉडल used to classify the unknown value called classifier. ठीक है? Predictor is constructed from training set and its accuracy refers. Is created. And its accuracy refers to how well
Predictor is created from a training data set, ठीक है. How well it can estimate the value of the new data. Predictor is constructed from a training set and its accuracy refers to how well it can estimate the value of a new data. Classifier is also constructed from a training set composed of records of the database and their corresponding class names. Prediction is about predicting a missing or unknown element from the dataset. Classification is about determining a class from an element in a dataset. ठीक है? Now again, model used for learning is classifying is called classifier. Model used for predicting is known as predicator. Is created from training data and accuracy refers to the how well it can estimate value. It's also constructed from the training set composed of the records of the database. From training
data set, also constructed from training set composed of records of database. बना दे मम्मी की भी। ये पैंट इसको भी टाइट करके पहन लेगा, है ना? मैंने तेरे पास एक ही पैंट रह गई है, वो जीन्स वाली जो पहन लेगा। आने जाने में तो ठीक नहीं लगेगी इसको, तो आई मेरे को देखनी पड़ेगी। निकाले तो फेंका, नीले मिलने से कहाँ रख दिए? तुझे दे दूँ आज हाफ कर दो, ये तेरा खाना। तुझे मैं ऑरेंज वाला दूँगी, ये पहन ले ला। तू अपना आयुष है, सुन, कॉलर पहन के ये पहन ले इसके ऊपर कॉलर। ये खास शर्ट पहन लेना। Consist of it's composed of the records of the database and their class. Composed of their class and ठीक है. Comparison of classification and prediction model and based on accuracy, they can be treated as ability of classifier to predict the class. अब देखो चीज क्या है कि आपको क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन बोला जाएगा. नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज अबाउट determining the class or label of an unknown value, ठीक है, of an element in a data set, ठीक है. Classification क्या था? It's a process of classification and prediction are the two main methods to mine the data. We use these two techniques to analyze the data and explore more about unknown data, ठीक है, and analyze the data to analyze it and explore more about the unknown data. Now, classification is the process of finding a good model that describes the data classes or concept, and the purpose of classification is to predict the class of the object whose class label is unknown. ठीक है. Now, classification क्या है? It's a process of finding a good model that describes a data class or concept. ठीक है. Classification is a process of finding a class. Classification is process of finding a label for an element in a data set. Describe the class of finding a good model. For finding a good model that describes the data classes or concepts and the purpose. Whose label is unknown. ठीक है. It's a process of finding a good model that describes the data class or concept. ठीक है. It's a process of finding a good model that can data classes or concepts. ठीक है.
क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गुड मॉडल मॉडल, ठीक है, a good model that can describe the data classes or concept, ठीक है. Data classes or concepts, finding a good model that can describe the data classes or concepts and the purpose and the purpose of classification is to predict the in simple terms we can think of classification as characterization of incoming data based on the assumption, ठीक है. Of new incoming data based on a past assumption. Prediction क्या होता है? Is something that may go happen in future, and just like that prediction we identify or predict the prediction, okay. Prediction we identify or predict the missing or unavailable data for new observation based on the previous data. Okay, for a new observation we good model for predicting the missing, ठीक है. Finding good model the missing or the data for new observation based on previous future assumptions, ठीक है. First name, treatment, grouping of patient based on person based on records, ठीक है. तो ये हो गया प्रेडिक्शन का. क्लासिफिकेशन क्या होता है? इश्यूज क्या है of prediction classification, accuracy, speed, robustness, scalability. issues रामचंद्र के खास सवार है. रामचंद्र के खास सवार है. डेटा क्लीनिंग क्या होता है? डेटा रिमूविंग द नॉइस इन द डेटा to do analysis
process of removing noisy, irrelevant, missing or and fixing unknown values. ठीक है. On data to find relevant data according to problem. For example, we use correlation analysis to compare various classes. After cleaning the data, we have to do analysis on data to find the relevant data according to problem. Solution analysis to compare various classes and classification after cleaning the we have to do analysis on data to find the relevant data according to problem. Relevance. After cleaning, we have to do analysis on data to find data to problem. So that was all about it. हमने देखा क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमने देखा प्रेडिक्शन क्या होता है, फिर हमने इन दोनों का डेफिनेशन अच्छे से देख ली. One is the process of finding a model that can classify or label, provide labels to the data, unlabeled data. ठीक है. Provide classification is to predict a label of values whose classes are known. ठीक है. और characterization of new incoming data based on the past significance. Prediction is just finding a good model for predicting missing values or unavailable data for new observation based on the previous data and future assumption. अब बात आती है कि issues क्या है इसमें data cleaning पर. उससे पहले इसमें क्या था, दोनों का डिफरेंस था. ठीक है. डिफरेंस में हमने देखा कि इट्स लाइक डिटरमाइनिंग द क्लास फॉर एन एलिमेंट, इट्स लाइक डिटरमाइनिंग लाइक प्रिडिक्टिंग द नोन वैल्यूज. ठीक है. और मिसिंग वैल्यूज. और इसका एग्जांपल देखा फिर हमने लाइक प्रिडिक्टिंग द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द सम डिजीज, तो विच इज क्लासिफिकेशन. एंड उसके बाद हमने उसका एग्जांपल देखा प्रिडिक्शन का. इट्स लाइक this is prediction का example, this is classification example, a grouping of person based on their medical conditions. ठीक है. मेडिकल रिकॉर्ड्स या वो भी जो भी है. अब ना इसके बाद हमने एक और देखा कि प्रेडिक्टर क्या होता है. सो अ मॉडल दैट इज यूज्ड फॉर क्लासिफाई द डेटा इज नोन एज क्लासिफायर. मॉडल यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन इज नोन एज प्रेडिक्टर. प्रेडिक्टर में क्या होता है, इट्स क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट एंड इट्स एक्यूरेसी रेफर्स टू द हाउ वेल इट कैन एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ अ न्यू इनकमिंग डेटा की वैल्यू कैसे एस्टिमेट कर सकता है. नाउ क्लासिफायर इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा एंड इट कंपोज्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेटाबेसेस एंड देयर क्लास नेम. ठीक है. इसमें के अंदर क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटाबेसेस एंड देयर क्लास नेम. फिर हमने देखा कि किन चीज़ों पे इनकी वो डिपेंड करती है. ठीक है. रोबस्टनेस वगैरह. दीज आर द कंपैरिजंस ऑफ बेस्ड ऑन द कंपैरिजन क्राइटेरिया फॉर एक है, मतलब इसके बाद आया था कि क्राइटेरिया फॉर कंपैरिजन ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर प्रेडिक्शन. ठीक है. वो है अपना स्पीड, रोबस्टनेस. स्पीड का मतलब है फास्ट कितना, रोबस्टनेस मतलब एक्यूरेसी से थोड़ा रिलेटेड हो जाता है ना. एक्यूरेसी, रोबस्टनेस, करेक्ट प्रेडिक्शन कितनी, स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी. ठीक है. इंटर और रियली वी कैन अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द प्रेडिक्शन. इंटरऑपरेबिलिटी. अब बात करते तो फिर हमने ये देख लिया. फिर क्राइटेरिया के बाद फिर हमने बस ये देख लिया कि इश्यूज क्या हैं. टू मेन वी हैव टू परफॉर्म ऑन डेटा बिफोर क्लासिफाइंग और प्रेडिक्शन. ठीक है. सो इश्यूज क्या हैं, दैट वी परफॉर्म
टू मेन ऑपरेशन बिफोर क्लासिफिकेशन या फिर प्रेडिक्शन से पहले हमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो है डेटा क्लीनिंग, वो क्या होता है पता है, डेटा रिलेवेंस एनालिसिस क्या होता है। आफ्टर क्लीनिंग वी हैव टू एनालाइज टू फाइंड द रिलेवेंट डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। इसका एग्जांपल काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है इन्होंने। We might normalize the result data is more accuracy while predicting for unknown value, ठीक है। After cleaning and analyzing we might need to normalize data also, ठीक है। तो हो सकता है कि normalize भी करना पड़े for more accuracy, obviously अच्छी accuracy देता है, ठीक है। predicting unknown value normalization can be achieved. Now this is about issues regarding the data, like you know अब इसके बाद करेंगे regarding what issues regarding what classification and prediction, ठीक है। So this is our issue, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि डिसीजन इंडक्शन ट्री की, वो क्या होते हैं।